चैप्टर का नाम न्यूक्लिया ही है, एटम्स है। सो फोन निकालो, कैलकुलेटर यूज करना है। फोन निकाल लो, कैलकुलेटर यूज करना है, ठीक है। सो वी अराइव्ड लास्ट क्लास में। कुछ रिजल्ट्स बता दो मुझे, लाइक फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का रिजल्ट होगा, एक रेडियस का रिजल्ट होगा, ये दोनों मुझे बता दो। Velocity equals to k z e square के जेड ई स्क्वायर times 2 pi टाइम्स 2 पाई by nh. बाई एन एच, ये है के जेड ई स्क्वायर बाई। अच्छा, और आर का वैल्यू? nh by 2 pi whole square. इसमें एक गलती पकड़ी थी ना अमित तुमने? ठीक है ठीक है, उसको बोल लेने दो, फिर अगर गलत है तो बता देना मुझे, ठीक है। Into 1 by k z e square. इंटू 1/k जेड, नीचे है सही लिखा है, ठीक है ना? है दर्श, ओके, आगे कर लो उसको, आगे आ जाओ, और ओपन दैट ऑल्सो, ओके, थोड़ा सा, बस 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 बस, जाओ, ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाट दिस वाज अबाउट अ न्यूक्लियस and electron. So electron which was in nth orbit, it was in nth orbit, it has the speed of that electron is this, and the radius of this orbit is this, okay, ठीक है, ये speed है इसकी, ठीक है, fine. So because this electron, लिखो, this electron is in motion, therefore it has kinetic energy. This electron is in motion, therefore it has kinetic energy. Okay. And because this electron is still bound to the nucleus, so electron is negatively charged, nucleus is positively charged. So these two are opposite charged particles still bound to each other. Therefore, they have a potential energy, right? Because electron is in motion, it has kinetic energy. And because it is bound to the nucleus, it has potential energy. Now, what is the kinetic energy of the electron? Ke of electron? It is half m v square, where m is the mass of electron and v is this expression. अमित, इसमें गलती तो नहीं है? इसमें m तुम बोल रहे थे ना, इसमें मिस्टेक है एक। ये मैंने पिछली बार बोर्ड पे लिखा था ना, इसमें एक मिस्टेक थी, m एक जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आया था कहीं पे। देख लो, तुम चेक करो एक बार, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आया था कहीं पे, इसमें तुमने मुझे बोर्ड पे दिखाया था, इसका डेरिवेशन जाके चेक करो वापस। Moisha, Srija and Shuprita, keep your videos on, or otherwise I'm making this classroom only video classroom. क्या क्या? M नहीं है ना इसमें, M होना चाहिए, Rn में M नीचे होना चाहिए, ठीक है। अपना डेरिवेशन जाके देखो, जहाँ पे Rn डिराइव किया है उसमें लेफ्ट साइड में लिखा है M, फिर कुछ V, Rn इज इक्वल टू NH/2 पाई, और वहां पे V का वैल्यू डाला है, ओके, we have put the V value there, but you can see that the derivation which you did in the class, and I wrote the expression for R, there should be M in the denominator. Check your derivation, okay.
I'm putting M here. I skipped writing the M. Fine. Okay. Now, so you should understand that there is a Ke of electron, okay, and there is a Pe of electron. Why is P kiska hai? P is because of the two charged particles, Q1 and Q2. What is the first charged particle? Electron. What is the second charged particle? Nucleus. Okay, and they are separated by a distance R, the same R, no? Okay, what is the P का formula? K Q1 Q2 by R. K का formula half mv square. ठीक है? And you also write the sum of kinetic and potential energy is called mechanical energy. It is also called just U. So therefore, there is a mechanical energy associated. Ke plus Pe is equal to mechanical energy. Okay. So we are going to find the Ke, Pe, and Te. Now see what. Let's write Ke. Ke is equal to half into mass of electron into V square. ठीक है? हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और V का वैल्यू यहां से निकालेंगे, इसको डाल देंगे यहाँ पे. ठीक है? We'll put V का वैल्यू डालेंगे 13.6 स्क्वायर. V का वैल्यू डालेंगे तो आएगा K स्क्वायर. K square Z square e raised to 4 pi square by n square h square. 4 pi square by n square h square. सही है? ठीक. Now I'm going to circle a few things, okay, shade a few things. Those few things are constant and you have to put those values, okay. Okay, so Daniel, what is this of? कितना होता है? Very good. And ठीक है, what is this? K मतलब वो 1/4 pi epsilon naught है. ठीक है, 1/4 pi epsilon naught. ये क्या है? Correct value. Yes, this value is 1.6 minus 19. K value is 9 into 10 power 9. Okay, and this is 4 pi square. And then you have h square. H also you know. ठीक है? और half भी है number है. ठीक है? So basically what I want you to do is I want to put user calculator, put all those yellow values, tell me what is the value, and you will get something into z square by n square. Right? I want that something. Wait a minute. जी हाँ. अच्छा इधर.
या ई, हाँ ई मतलब ई पावर, दैट इज 10 पावर माइनस, when calculator says 5 in 5e 10 then minus 10, 5e minus 10 means 5 into 10 power minus 10. 2.468 2.468 into 10 power minus 19. ठीक है, अभी ये, अच्छा ये देखो ये किस क्या निकाल रहे हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड, ये क्या एक्सप्रेशन है, काइनेटिक एनर्जी का है, राइट? सो एंड ऑल्सो सी यहाँ पे दिस वैल्यू इज दिस, ओके, यू गाइज ऑल्सो क्रॉस चेक, ओके, वेदर इट्स कमिंग द सेम और नॉट. एंड सी दिस z मतलब क्या है, z क्या है, एटॉमिक नंबर है, शेल नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर है, तो एक नंबर है, उसका कोई यूनिट नहीं है, यस और नो. और n क्या है, NH शेल, वो भी नंबर है, उसका यूनिट नहीं है, तो इस चीज का तो यूनिट नहीं है, देयर इज नो यूनिट. और व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड लेफ्ट साइड इज kE, दैट मींस दिस नंबर मस्ट हैव अ यूनिट, राइट, एंड दैट यूनिट मस्ट बी, अरे सब कुछ तुमने ऐसा यूनिट में डाला है तो क्या आएगा यूनिट, काइनेटिक एनर्जी का जूल आएगा, तो ये जूल है इसका आंसर, ठीक है. बट आई वांट यू टू फाइंड द आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, just divide by I think minus 18 ना, हाँ हाँ, अभी इसको डिवाइड करो 1.6 into 10 power minus 19 से, so that you get the answer in electron volt. minus 13.6, no minus नहीं, प्लस ही, नो माइनस कहाँ से आ जाए, प्लस नो. So I'm getting the energy minus. How, which, why are you getting it a minus, which term is minus, only the power is minus, Yeah. right? No, well, like it's a positive number, okay. So you will get this as 13.6 electron volt, okay, fine. This you have to remember, ये remember रखने की जरूरत नहीं है, this don't know it remember, ये remember रखना है क्या, the KE is equal to 13.6 Z square by N square, ठीक है. This shows you some things. For example, kinetic energy varies, first of kinetic energy का variation पता होना चाहिए, kinetic energy varies as Z square and kinetic energy also varies as 1 by N square, okay. ठीक ठीक है, okay. Now so this was kinetic energy. Now we'll find PE. While you're calculating PE, देखो PE क्या था, PE was it was PE का, the relation would be, the expression would be क्या, you can find mechanical energy minus T, but we don't know mechanical energy yet, right? Second thing which you can do is simple, it's two charges separated by a distance r, so we'll just write K Q1 Q2 by r. What is Q1, ZE, what is Q2, E, बस वही है, डाल देते हैं K Q1 Q2, so this should be K Q1 Q2 by r and K ZE into E by r, sorry r, just r, not r square, ठीक है. K Z E square by r, और r का वैल्यू डालना पड़ेगा पीछे से, ठीक है. r का वैल्यू है NH स्क्वायर, r का वैल्यू है NH n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर, ऊपर आएगा 4 पाई स्क्वायर, ऊपर आएगा 4 पाई स्क्वायर, नीचे आएगा MKZE स्क्वायर, MKZE स्क्वायर, MKZE स्क्वायर, ठीक है. ये आ रहा है, ओके. लेट अस जस्ट चेक, ये सही है क्या, ये r का वैल्यू नहीं 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 ऊपर आएगा ना, r इज नहीं, ओके ओके, वन सेकंड, गलत लिख दिया, r में डिनोमिनेटर में है KZE स्क्वायर, MKZE स्क्वायर, तो ये ऊपर आएगा MKZE स्क्वायर, MKZE स्क्वायर n स्क्वायर क्या हुआ, हाँ यस. तो यहाँ पे तो ऑब्जर्व करेंगे, देखो ये इसको देखो, ये एक्सप्रेशन है फॉर पीई, ठीक है.
इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो आएगा k स्क्वायर z स्क्वायर, दिख रहा है, e पावर कितना है 4, क्या क्या हो गया देख ले, k हो गया, z हो गया, e स्क्वायर हो गया, k हो गया, z हो गया, e स्क्वायर हो गया, अब बचा क्या है, m बचा है ऊपर, m, फिर 4 पाई स्क्वायर बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। अगर आप इसको देखो ध्यान से, ठीक, और पीछे वाला एक्सप्रेशन देखो के वाला, सब कुछ जो के में वो पी में है एक्सेप्ट क्या नहीं है, बस एक हाफ नहीं है, बाकी सब कुछ है। देखो जाके एक्सप्रेशन कंपेयर करो, कंपेयर द एक्सप्रेशंस। अच्छा एक चीज और, एक गलती कर दी यहाँ पे, सिली मिस्टेक, वन चार्ज इज पॉजिटिव, वन चार्ज इज नेगेटिव, विच इज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, नो, ये Q2 नेगेटिव, माइनस ही डालना चाहिए, so it should be minus, minus, okay, now compare the two, sorry, compare this thing, ये पूरा पूरा ना, जो ग्रीन शेड किया ना, तुम भी शेड कर लो, ठीक है, पेंसिल से, ये पूरा पूरा यहाँ है, ठीक, and now this is the most important thing, you have to remember that this green thing, इसका वैल्यू तुमको पहले से पता है, उसमें से z स्क्वायर बाय n स्क्वायर हटा दो तो वैल्यू पता है तुमको ना, इट इज -13.6, राइट, इनटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक, so this is, you have to remember always, okay, sorry, that ke was equal to half of something, so I'll call that something lambda, okay, something मतलब वो green thing lambda है, pe is equal to minus of that lambda, yes or no, lambda ये है पूरा, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है, ऐसे नाम दिया है मैंने लैम्डा, कुछ भी दे दो, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है, बस क्योंकि रेशियो निकालना है बाद में, ओके, अंडरस्टूड, देयरफॉर टीई क्या होगा, टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, टोटल सम होता है ना, कितना आएगा सम, माइनस हाफ लैम्डा, राइट, माइनस हाफ लैम्डा, सो देयर आर सम रिलेशंस, अगर तुमको ये पता है तो काफी चीजें इसे ऐसे ही डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द रेशियो ऑफ के टू पी, राइट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ के टू एम, ठीक है, which of them is positive, ke is only positive, okay, which of them is negative, p and t are negative, so all, तो तुमको ना जब ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे which are just ratio साइन, तो इस पे नहीं जाना है, इस पे नहीं जाना है, ठीक है, ये याद रखना है, ये दिस यू हैव टू रिमेंबर, ओके, फाइन, ठीक, अच्छा एक चीज और लिखो, systems which are stable, systems which are stable must have a negative total energy or negative mechanical energy, yeah, and because this system's mechanical energy is negative, the system is stable, okay, it is not unstable, this electron will keep revolving around the nucleus, okay, fine, from grade 12th तुमने जो पिछले 3 पेज में पढ़ा है ना, this is the most concentrated topic for questions, concentrated means you study this much and so questions इतने सारे आएंगे, same thing, so for example the derivation which you have done last class will come in boards, derivation derive करके दिखाओ, ठीक, और there will be one marker की लिथियम का इतना है रेडियस, तो हाइड्रोजन का कितना है, ओके, बिकॉज Rn is proportional to some Rn proportional to n square है ना, वहां से ऐसे जो पिछली बार क्लास में 2-3 we did,
ठीक, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भर भर के आएगा इससे, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है इस पेज से, ठीक है। तो विल सॉल्व सम सम्स, ओके, ऑफ how do questions come like this, okay. You are expected to practice the derivation once, okay, so that you know it is fluent for you. लिखो क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और लिखो, Rn was proportional to n square, नो? तो इसका जो Rs का जो Rn का जो कांस्टेंट होता है वो होता है a नॉट n स्क्वायर, a नॉट n स्क्वायर, ठीक। एंड दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड, तो अगर उसमें n को 1 डालोगे, n को 1 डालोगे तो जो रेडियस आएगा, लिखो, व्हेन वी पुट n इक्वल टू 1, द रेडियस व्हिच वी गेट इज called Bohr radius. What? So what's A naught? A naught is a constant which, like in proportionality, when you write now Rn is proportional to n square, so Rn is equal to A naught n square, and A naught constant is called Bohr radius, BOHR, Bohr radius. A naught is called, yeah, good question. A naught is different for different elements. एक मिनट मैं देख लेता हूँ कहाँ पर लिखा है। मिलेगा तो बता देता हूँ, ठीक है, छोड़ो। ये बोर रेडियस कितना होता है वैल्यू भूल गया हूँ मैं, अगर बुक में तुमको दिख रहा है तो बता दो। कुछ 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है, आई फॉरगॉट। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ, हम करेंगे वो, ठीक है। सॉरी, लिखो द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the stationary state in the nth orbit, the total energy of electron in the stationary state in the nth orbit of hydrogen atom is, हाइड्रोजन एटम में तो z कितना है, 1 है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना होता है, टोटल एनर्जी होता है, अच्छा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, हाँ, माइनस के ई होती है, माइनस के ई होती है, हाँ। और के ई का सिंपल एक्सप्रेशन था, यहाँ पे निकाला था हमने, -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, नो, के ई का था 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, राइट। सो टोटल एनर्जी याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट एक्चुअली, मैं भूल गया बताना। यहाँ पे लिखो टोटल एनर्जी होती है -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना क्यों? के ई थी 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, सो टी टोटल एनर्जी कितनी, माइनस ऑफ दैट। फॉर हाइड्रोजन एटम z कितना है, 1, सो इसका एनर्जी फॉर एनएच कितना होगा, -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। लिख लो एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या स्टेशनरी स्टेट मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपने n इक्वल टू 1 डाला रेडियस के फॉर्मूले में, ठीक है, रेडियस के फॉर्मूले में n को 1 डाला, वो है ना रेडियस का फॉर्मूला राइट साइड पर, n को 1 डाला तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, वो वैल्यू होगी 1 इंटू मल्टीपल ऑफ दिस, राइट। फिर आप n को 2 डालोगे तो आएगा 2 इंटू मल्टीपल ऑफ दैट। सपोज वो जो ग्रीन चीज है ना उसका वैल्यू है 10, ठीक है, 10 एंगस्ट्रॉम समथिंग, तो द फर्स्ट रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज एट 10 एंगस्ट्रॉम एंड द सेकंड रेडियस इज एट, सेकंड ऑर्बिट इज एट 20, राइट। तो प्रॉब्लम नहीं है, n स्क्वायर है, सॉरी, तो 40, राइट, पहला 10 पे, दूसरा 40 पे। that means that electron, you cannot find an electron at a distance of 15 from the nucleus. So electrons are only allowed to stay in those orbits, let's say first orbit which is a distance of 10 from the nucleus, and then at a distance of 40 from the nucleus, okay. If the electron is not in these states, okay, then its energy, wo padha tha 10th mein, its energy will slowly reduce and it will spiral down and it will go into
right? This orbiting is not stable. ये तो उसको stationary बोलते हैं. Stationary मतलब electron is moving in that, but the state is stationary. Electron वहाँ पे घूमता रहेगा हमेशा, नीचे spiral नहीं करेगा. That is the meaning of. Okay, next you write. एक क्वेश्चन है, पूछा है कि what is the value of, लिखो write the relation of the following with respect to n. रिलेशन मतलब कैसे दे आर वेरिंग, प्रोपोर्शनल क्या है, प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर 1 by n, ये क्वेश्चन है, ठीक है. एंड द फोर थिंग्स आर एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, रेडियस एंड एनर्जी. एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, रेडियस एंड एनर्जी, इनका रिलेशन चाहिए n से कितना होता है. एंगुलर मोमेंटम मैं लिख दे रहा हूं, अगर तुम लोग को भूल गया तो. लीनियर मोमेंटम, रेडियस तुमको पता ही है, एनर्जी तुमको पता है, निकालो. व्हाट इज द रिलेशन ऑफ देम विद रिस्पेक्ट टू n. दर्श, लीनियर मोमेंटम में कितना आया? विमान, लीनियर मोमेंटम कितना आया? 1 by n. एंगुलर मोमेंटम just n, सही है. and then there was radius proportional to n square. Energy, if you have not got, please ask, I'll explain how they are. Okay. So will you explain the level? Sir, can you explain once? What? Sir, can you explain? Yeah. I joined late, sir. Linear momentum is mass into velocity, and if you see the velocity expression, velocity में कहाँ पे n है, देखो कहाँ n, velocity में do you see n? उधर देखो कहाँ पर है, नीचे. कितनी बार? एक बार, नो, बस. तो velocity और मास में तो होता नहीं है, so it is just 1 by n. फॉर एग्जाम्पल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, उसको बताता हूँ. mvr, ठीक. अब m है, v और r है. v में नीचे 1 by n है, दिख रहा है? v में नीचे 1 by n है, और r में क्या है? ऊपर है n स्क्वायर, न्यूमरेटर. सो you'll have n square by n, which is n. So therefore angular momentum is proportional to n. Okay, ठीक है. Sir, can you show the previous two slides once? Pardon? Can you show the previous two slides? These ones. Thank you, sir. Copy this and you copy this, then you will understand. देखो क्वेश्चन, लिखो बाकी लोग. For which of the following system is the radius of the first orbit minimum?
For which of the following system radius of the first orbit is minimum? First option, doubly ionized lithium. First orbit R1 is minimum. Okay. First option is doubly ionized lithium. Doubly ionized lithium. Okay. Second is singly ionized helium. Singly ionized helium. थर्ड ऑप्शन इज ड्यूटेरियम एटम. ड्यूटेरियम पता है ना, बताया था, ठीक. और फोर्थ इज हाइड्रोजन एटम. अच्छा, एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया. जब ये व्हेन वी आर स्टार्टिंग दिस डेरिवेशन, ऑल दिस डेरिवेशन जो पिछले क्लास में वी हैव डन डेरिवेशन, इट इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. दिस ऑल दिस वैलिड इलेक्ट्रॉन एंड ऑल दीस रिजल्ट्स जो भी किया है इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन. शुड बी वन इलेक्ट्रॉन इन द सिस्टम स्पीशीज. ओके, राइट दैट. दैट्स व्हाई तुम ऑप्शन देखो, लिथियम का डबली आयनाइज्ड है, मतलब लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3. उसमें से 2 हटा दिए, तभी आप बात कर सकते हैं. देन यू कैन ओनली अप्लाई these equations. Okay, helium singly ionized. Understood? करो. The one electron means there can be only one electron. Like I can't use this to calculate for gold. If it is one, gold का atomic number कितना है? 79 है. So if it is 78, AU 78 plus, हटा के तब you can use it. But I can't use like just to find for one electron. जैसे मैं पूछूंगा गोल्ड का जो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना है, तुम ऐसे नहीं बोलोगे Rn is n square by z. अब फिर एक मिनट, Rn is वैसे n square by z, नो? हाँ, n square by z है ना. तो तुम बोलो गोल्ड का n square, मतलब मैं थर्ड ऑर्बिट पूछ रहा हूँ तो तुमने 9 बोला, n equal to 3 और z equal to 79. वो नहीं कर सकते, ठीक है. बट अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तब कर सकते हैं. क्या? हाँ हाँ, ये नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन सिंगल होना चाहिए, वो जा सकता है. इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू. क्या क्या? नहीं नहीं, ऐसे मतलब यूजुअली स्टेज, बट इफ यू चार्ज इट, करेक्ट, इट कैन गो टिल 7th 8th 10th 12th. What is the point? वो point next class में होगा जब we will find out कि what is energy transition, कि if it goes from 4 to 3 what is the energy it emits. ठीक है, अब ये आंसर बताओ. Simply n square by z. Put those values, you will get. n तो 1 ही है, is proportional to 1 by z. बस ना, तो And आंसर this over this one. पूछ ही रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ रेडियस फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, है ना. फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस इज 1. ठीक है. I think its answer is doubly ionized lithium because Rn is proportional to 1 by z if n equal to 1. और z सबसे ज्यादा किसका है? लिथियम का है. ठीक है, फाइन. You can give me one by one. Z is also 1 for deuterium, and hydrogen, it's also called protium, also has z equal to 1. ठीक है. ठीक, लिखो. Next question. If E is the if capital E is the energy of nth orbit of hydrogen atom. If capital E is the energy of nth orbit of hydrogen atom, the energy of nth orbit of He atom will be. Sir, can you repeat that question? If E is the energy of nth orbit of hydrogen atom, the energy of nth orbit of helium atom will be.
Hmm? 4e. Everyone has got 4e. Hmm? Okay. So in deuterium, there's no electron, right? In deuterium, in protium, is there an electron? First isotope. H hydrogen, is there an electron? Yes or no? Yeah. Yes. So deuterium is just another isotope. Isotope means only one. Neutron and Yes, neutron is added. none of them are electron. No, you don't play with electron protons in isotopes. Okay. Okay. Now, I hope everyone is clear with this much. Okay. चलिए बताओ, सोचो हाइड्रोजन एटम के लिए लिखो हाइड्रोजन एटम फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लिखा था तुमने कितना था माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर z का वैल्यू 1 सो इट इज माइनस 13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर लिखो फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज माइनस 13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर ठीक है ठीक है अभी देखो तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना है ठीक है एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट माइनस 3.4 कैलकुलेटर यूज करके बताना ठीक है E3 कितना है माइनस 13.6 डिवाइड बाय 9 कैलकुलेटर निकालो बताओ रीचेक करो ये 3.4 ये कि नहीं 4 3 से 12 4 4 is 16 करेक्ट माइनस 1.52 51 ठीक एक और बताना एक और चाहिए माइनस 0.85 ओके nucleus shell number 1 shell number 2 shell number 3 shell number 4 if I actually make those shells are proportional to n square right so अगर पहला शेल एक डिस्टेंस पे है तो दूसरा शेल will be at a distance of 4 no so if I'm drawing this to scale it will be like this if this distance is 1 then this distance has to be 4 right because Rn is proportional to n square ठीक और तीसरा वाला शेल फिर कितना होगा 9 डिस्टेंस पे ठीक तो ऐसे शेल तो दूर दूर होते हैं ठीक है so I'm not drawing this to scale okay but you should understand that the shells are not separated at equal intervals fine पहले वाले का एनर्जी कितना है माइनस 13.6 दूसरे का एनर्जी है माइनस 3.4 तीसरे का एनर्जी माइनस 1.51 फिर चौथे का एनर्जी माइनस 0.85 ठीक है अगर n इंफिनिटी होता है तो एनर्जी कितना आएगा 0 तो देयर आर एक्चुअली इनफाइनाइट शेल्स ओके और E infinity equal to 0 infinity means that the electron is effectively outside of the outside of the atom okay it is free लिखो E infinity means just free हुआ है ठीक है वो ठीक है
सपोज इलेक्ट्रॉन पहले n इक्वल टू 1 में है, ठीक, उसको एटम से बाहर निकलना है, ठीक है। केमिस्ट्री में इसका एक नाम है इस एनर्जी का, इसका एक प्यारा सा नाम है, क्या नाम है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू, इट्स कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। देखो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू कम आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस अट्रैक्शन और एटम is called ionization energy. ठीक है, फिर लिखो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ एन इलेक्ट्रॉन goes from state I to state F, if an electron goes from state I to state F, the energy required for this process is EF minus EI. It is EF minus EI. ठीक है, fine. But if you give this much energy to electron, it will jump from I to F or F to I? I to F. ठीक है, it is always final minus initial. Energy final minus energy initial is final. ठीक है, so right, if the electron wants to jump from n equal to 1 to n equal to infinity, लिखो, if electron wants to jump from n equal to 1 to n equal to infinity, that energy will be called ionization energy for a neutral hydrogen atom. Actually, From 1 to infinity. yes, if the n is equal to 1 to n equal to infinity, then that energy will be called ionization energy for neutral hydrogen atom. और ये कितना वैल्यू है बताओ, कितना वैल्यू है? अरे निकालो ना, ये फाइनल कितना है? 0 है। ई इंफिनिटी कितना है? माइनस ऑफ माइनस 13.6, so you will get 13.6, right? This energy is positive. Positive मतलब endothermic, exothermic? Positive means endothermic. मतलब you need to give this much energy to the electron so that it goes from 1 to infinity or outside the sphere. Understood? ये भी लिखो. Because this energy is positive, it is endothermic. You should understand that E infinity minus E1 will be coming out to be plus 13.6 electron volt. Okay. And this energy is positive, it means it is endothermic. That means if you give this much of energy to n equal to 1 electron, it will go out of the atom. Okay. Sphere of, we go out to the sphere of influence. Okay. Okay. Fine. यही जो एनर्जी है ना, यही ओरिजिन है वर्क फंक्शन का, ओरिजिन है वर्क फंक्शन का, यही एग्जैक्टली यही वर्क फंक्शन नहीं है, यही रीजन है कि वर्क फंक्शन होता है किसी भी मेटल का। ठीक है, अच्छा अभी लिखिए, अच्छा वो जो बोर ऑर्बिट था ना, बोर रेडियस ए नॉट का वैल्यू वो था 0.529 एंगस्ट्रॉम, लिख लो, ए नॉट वैल्यू वाज 0.529 एंगस्ट्रॉम, 529 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, या एंगस्ट्रॉम इज 10 to the power minus 10 मीटर, नो, एंगस्ट्रॉम इज 10 to the power minus 10 मीटर। ओके, बोलिए फिर से। या लिखो, क्वेश्चन लिखो,
एनर्जी तो तुम्हें पता है हाइड्रोजन कितनी है, ई का फॉर्मूला कितना है और हाइड्रोजन ए E1 नहीं बोला, ई बोला बस, ई फॉर हाइड्रोजन क्या फॉर्मूला है -13.6 by n square. I have not specified which orbit. So for मैंने सिर्फ बोला for hydrogen. So you put z equal to 1. So it is -13.6 divided by n square electron volt. ठीक है. Find the energy electron needs, or sorry, listen. If an electron, do you understand that? यहाँ पे देखो. If electron is jumping from 1 to 2, 1 to 2, EF minus EI आएगा E2 minus E1. Right? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा. That means this much energy is to be supplied to the electron so that it jumps from 1 to 2, right? Whereas think about the opposite. If the electron is going from 2 to 1, this delta E is negative. That means this much energy is exothermic. Exothermic, this much energy is released, right? So this you have to accordingly write the language. आपको अपने से लिखना है, ठीक है? You are expected to write कि it is released or it is absorbed, ठीक है? बोलो पहले तो बताओ 2 to 3 नहीं सॉरी 3 to 2 क्या होने वाला है, released, right? That's what they are asking. 3 to 2 what is released, click बताओ. In hydrogen atom 3 to 2 how much is released? कितना 0.89. चेक कर लो. 2 to 3 बोला ना, 3 to 2 सॉरी 3 to 2 1.89 1.9. ठीक है, क्या सबको समझ में आ गया? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम 3 to 2. नेगेटिव आना चाहिए, but I'm asking because how much is released, so I'll just saying it with sign, without sign. सोराली कुछ नहीं आया क्या? आ गया, ठीक है, ठीक है, understood? Okay, now see, very simple. -5 is bigger or -4 is bigger? -4 is bigger. Very simple ना. मैग्नीट्यूड में बात नहीं कर रहा है, तो साइन है उसे बात कर रहा है. So, किसका एनर्जी, ये जो शेल के दिख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है? कौन सा शेल का? Which energy is the highest in these shells? इंफिनिटी वाला, राइट? ये पता है ना, समझ में आ रहा है? ये ऐसे ही लिखना है, ऐसे मत बोलना कि वो 13.6 is more than 3.5, so the energy of first shell is more than energy of second shell. No, energy of second shell is more than energy of first shell. Second shell is a higher energy than the first shell. Okay, so if I say electron goes into higher energy shell, it goes to outer shell. If it goes to a lower energy shell, it goes to a नीचे का shell. Understood? लिखो पहले तो ये. नहीं लिख रहे तुम? Sorry. है ना, ठीक है. अभी I'm making shells, okay? So shells are usually not represented by these circles, okay? How do you represent shells? Is like this. And see why ऐसे स्पेस क्यों करते हो आप? ये जो एनर्जी लेवल्स है ना, ये -13.6 है, -13.1, -1, माइनस ये जो वैल्यूज हैं, if you put them on a vertical scale, like ग्राफ पे, ग्राफ छोड़ो, स्केल ऐसे लिया, एक वर्टिकल स्केल लिया और उसमें देखो 0 यहाँ पर है, ठीक है, और नीचे -13.6.
तो ये वाला कितना होगा -3.4 अंडरस्टूड एंड देन -3.4 फिर -1.51 you will be getting closer to zero, right? The shells will energy wise, if you write these shells, they will get closer to each other. The energy radius wise nahi hai. Radius wise they are going away from each other, farther from each other, but energy wise they are getting closer to each other. Okay, ठीक है? So ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6. Okay, because they are getting closer to each other, you can write following reductions. Which requires more energy, 1 to 2 or 2 to 3? लिखो इसको. Which requires more energy, 1 to 2 or 2 to 3, and then you tick 1 to 2. Which is at more distance, 1 to 2 or 2 to 3? 2 to 3. ये भी लिख लो. Which is at more distance, which is more far, 2 to 3. Sorry. ठीक है? Okay. ठीक है. Okay. Now, if electron goes from 1 to 2, that means it had absorbed energy, right? Absorbed energy. ठीक. कितना energy चाहिए from 1 to 2 के लिए? How much energy is needed for going from 1 to 2? 10.2 electron volt. Okay. तो यहाँ पे will you write some values. Okay. जैसे इसके लिए यहाँ से 10.2 है. ठीक. 10.2 है. 1 to 3 कितना है? 1 to 3 बताओ जल्दी से. देखो वहां पे अपने वैल्यूज E1 E2. हम्म 1 to 3 12 पॉइंट कुछ आएगा. 12.09. सो 1 to 3 is 12.09. अब देखो थोड़ा दिमाग लगाना. ठीक है. Is there any separation, energy separation which is more than 1 to 2? No. Like the closest two. जो भी दो closest shell हैं उसमें 1 to 2 is the highest. You can of course have 1 to 3 का energy is higher. 1 to 3 energy difference is higher. 1 to 4 will be even higher. But for any two closest shell, neighboring shell, there the maximum separation is हाँ जोर से बोलो 10.2, right? किसी को इसमें डाउट है कि नहीं? बोलो. नहीं है? ठीक. मैक्सिमम सेपरेशन कितना है? 10.2. ठीक. उसके बाद अब ये भी देखो 2 से इंफिनिटी तक का सेपरेशन कितना है? 2 से इंफिनिटी तक का सेपरेशन कितना है? 3.4 है. अब ध्यान से सोचना. 2 से इंफिनिटी का सेपरेशन 3.4 है. 1 से 2 का सेपरेशन 10.2 है और 1 से 3 का सेपरेशन 12.09 है. 1 से 4 का सेपरेशन will be slightly higher than 12.9 and of course it will be less than 13.6. Anything is less than 13.6. Any two separation is less than 13.6 because 13.6 is the maximum. The maximum है ना 13.6 तो. It is from here to here maximum 13.6. Yes or no? So any two separations are less than 13.6. ठीक है. 1 to 2 is 10.2. 1 to 3 is 12.09. Can you choose any two shells from your? You are free to choose them, such that the energy difference is, let's say, 11. Such that the energy difference is 11. आएगा क्या? कि नहीं आएगा? सोचो. हाँ, इन होल नंबर ही है. हाँ वो है. 11 नहीं आएगा ना? Do you understand? नहीं है. क्यों नहीं आ रहा है? No, you don't. No. You are free to choose any two shells, not just consecutive. That's why ये concept इसमें important है कि 2 to जो infinity है ना वो 3.4 है. तुम इसके ऊपर मतलब इसमें you choose any two out of these 2 to infinity, you are not going to get more than 3.4. You understood? If you choose any two shells out of 2 to infinity, you are not going to get more than 3.4 because 2 to infinity is 3.4. Have you understood the logic? So therefore you can say reduction, you are not going to get 11. Yes or no? हाँ समझ में आया? नहीं आ गया. ठीक. क्या आपको 12 मिल सकता है? 12 वो भी नहीं मिल सकता.
मतलब 12.09 और 12 अलग है, तो 12 नहीं मिल सकता, 12.10 मिल सकता है, मिल सकता है, कैसे मिलेगा? अगर 1 to 3 12.9 है, 309 है, तो 12.10 किस में होगा? हो सकता है 1 to 4, you have to check, it is possible, do you understand? You don't have to actually find, I'm just logic से बताना है कि हो सकता है कि नहीं, understood? 12.5 हो सकता है, हो सकता है, चेक करना पड़ेगा, yes or no? क्या हुआ? हो सकता है ना, ठीक। और ये भी सोचो, अगर मैं बोलूं 12.5, so you don't have to check from anywhere to anywhere, you have to check from 1 to somewhere. If I ask you, is there a shelf, is there a two transition possible with 12.5, you don't have, you only have to check from 1 to anywhere, because 1 to anywhere has the मतलब उसको ही है 12 हो सकता है, 2 to anywhere is maximum कितना? 3.4, 3 to anywhere is maximum कितना? 1.5. So if I ask you, let's say 2 कि एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मतलब द डिफरेंस एनर्जी इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किसमें आपको चेक करना चाहिए? हाँ, 1 से ऊपर और 2 से ऊपर ना, है ना? हाँ, 1 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से जो मिनिमम है वो कितना है? ये कितना है? ये 10 है ना, तो 1 भी नहीं हो सकता, तो आपको सिर्फ किससे चेक करना है? 2 to समथिंग, अंडरस्टूड? क्या सबको समझ में आया ये? गॉट इट? अब देखो एक चीज और, सेकंड थिंग, सपोज ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का एक गैस है, गैस कंटेनिंग हाइड्रोजन, so there are many atoms, right? And then what I do is I impart energy to this, so I'm throwing energy, ठीक है? So and that energy is in every range, so I'm also giving 1 electron volt, I'm also giving 2 electron volt, so that is a mixture containing every energy, ठीक है? So will 10.2 be absorbed? Yes or no? देखो उधर ऊपर देखो, 10.2 spectrum will be absorbed or not? Absorbed, it is possible, वो energy it can accept, right? Yes or no? क्या हुआ बेटा, समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, देख मैं क्या कर रहा हूँ, ये आई एम गिविंग दिस, एक गैस है, एक हाइड्रोजन, एक चेंबर है, उसमें हाइड्रोजन गैस है, ठीक है? H2 गैस, हाइड्रोजन H गैस है, ठीक? हाइड्रोजन एटम है इसमें, गैस नहीं बोलना चाहिए, हाइड्रोजन एटम है, ठीक? कई सारे एटम है, मिलियंस ऑफ एटम्स, ठीक? एंड इसमें मैं एनर्जी फेंक रहा हूँ, ठीक? दिस एनर्जी कंटेन्स all possible energy combination, this has 1 electron volt, 2 electron volt, 3 electron, 5 electron volt, इसमें सारा एनर्जी है, ठीक है? सपोज एक एटम कोई भी, उसका इलेक्ट्रॉन goes from 1 to 2 shell, so that atom will absorb how much energy? 10.2. There is another atom which absorbs 12.09, so उसका atom has gone from, electron has gone from 1 to infinity. 12.09 किसका था? Infinity, no sorry 1 to 3 का था, ठीक है? That means out of all these million atoms, एक भी ऐसा है जो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब कर रहा है? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना? Do you guys understand this? That means if I have a hydrogen here, right, and I throw energy यहाँ से एनर्जी थ्रो करो, और फिर जब एनर्जी से पास हो जाए ना, तो यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा लो, फिर चेक करो which of the energies were missing, which of these energies were missing. If 10.2 was missing, you can guess which atom was it? Which atom was it? Hydrogen. Understood? This is used to detect atoms. Very simple. Suppose if I don't know what is inside, right? ये हाइड्रोजन मुझे नहीं पता है हाइड्रोजन है, किसी ने नहीं बताया. I do this experiment, ठीक? और फिर I collect and report what is the missing electron volt, missing energies. I find that there are 10.2, 12.09, 3.4, all these are missing, but I find 11, वो missing नहीं है. That means it is hydrogen. This is called absorption spectrum. So you see an absorption spectrum of, so this is also used, for example, if you don't know what is there on the moon, कौन सा atom है, and you can't go, ठीक? So whatever radiation is coming from the moon, you analyze that, or some other distant galaxy, whatever, okay? Suppose सन से एनालाइज किया, सन से रेडिएशन आ रहा है, एनालाइज किया, उसमें देखा कि नहीं है मिसिंग, मतलब यू नो, सी एक्चुअली वी हैवंट वेंट टू द सन, राइट? सन से लाके यू कांट टेक अ स्पेसिमेन आउट, सो हाउ डू वी नो कि हाइड्रोजन है?
We all know hydrogen hai, hydrogen helium hai na. How do we know? Same thing. So you are collecting the data from the sun, then seeing what is missing. So we saw hydrogen spectrum is missing. Understood? And this is also used to detect elements in any other case where you want to detect elements. Okay, whether there is poison in your food or not. Okay, so there's that molecule will have every molecule will have a special, that spectrum, absorption spectrum. Okay, fine. Take. Next thing is, let's say I have n equal to, let's say hydrogen only were allowed to have 4 shells. Okay, 4 shells. If 4 people are there and all do handshakes with each other once, how many handshakes are there? If 4 people are there, 4 into 3 into, चलो 4 करो सिद्धार्थ अमित एंड निमी एंड आशी, सब लोग ना अपने से हाथ मिलाओ, बताओ कितने हाथ मिलेंगे? एक ही बार मिलाना, ठीक है? जल्दी करो। या 1 2 3 4 5, कोई बचा है 6. It is called 4C2. You are choosing any 2 people out of the 4 people, लिख लो 4C2. 4C2 कितना आता है पता है? It is 4 factorial by 2 factorial 2 factorial. ठीक है? अगर नहीं याद है, NCR is equal to n factorial by r factorial n minus r factorial. ठीक है? So if 4 people, so if there are 4 shells and you're allowed to have as many emissions as possible, then how many emissions will be taking place? 6, because electron can jump from, let's say, 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 2 to 3. कितने possible आएंगे? 6 possible emissions आएंगे. ठीक है? लिखो. And you are expected to find all those 6. Homework में लिख लो what are those 6 possible emissions or absorptions. ठीक है? We don't care about the order. Pardon? We don't care about the order. Order as in? Oh, you are saying 2 to 4 and 4 to 2 are different things. Oh, that energy is same, no? One will be called absorption, one will be called. When you say only 6 are possible. Yeah, yeah. 6 of emissions are possible, or absorptions. So like all or I don't. Oh, okay. No, I'm assuming only one jump. For example, you can either have electron jump from 2 to 4. 2 to 4 एक है jump. वैसे 3 to 4 एक jump. ऐसे कितने jumps हैं? Understood? 6 jump है possible. 6 possible energies आएंगी. ठीक है? ठीक. And 2 to 4, 4 to 2, same thing. One is called absorption, one is called emission. Okay, but the energy difference is same thing. होमवर्क है, पेज छोड़ लो, 6 के 6 निकालने हैं कितने, ठीक है? ठीक? जोर से बोलो. एक बार थोड़ा. Energy between atoms. Yeah. Yeah. Yes. So that will not be missing, you're saying? Very good. Very good. There is a possibility that is not missing due to one atom. Also you have, oh. अच्छा एक एटम होगा जो एब्जॉर्ब कर लेगा और 4 to 2 नहीं जाएगा. एक हो सकता है ना, तो बस एक में से एक बार मिस हो जाएगा. हाँ तो तुमने वो, अच्छा वो भी तो काउंट है ना कि हाउ मच ऑफ 10.2 यू आर गिविंग, वो भी काउंट है. बट गुड डाउट. ठीक है, नेवर थॉट ऑफ इट दैट वे. ओके. इसके बाद लिखो. There were 10 possible emissions. There are 10 possible emissions among some shells.
among some number of shells, there are 10 possible emissions among some shells. What is those number of shells? Yes, that is 5. Because 5C2 is 10. Okay. You do NC2 equals to 10. Yes. अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे बुक, इसमें बुक में, चलो ये करेंगे 1 to 3, सॉरी 1 to 3, 4 to 3, 4 to 2 and 2 to 1. 2 to 1 नीचे जा रहा है ना, ठीक. शो द एनर्जी ट्रांजिशन. तो इसमें तुमको बस वो एरो का डायरेक्शन छोड़ दो, ये बता दो अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ सो इंक्रीजिंग एनर्जी ट्रांजिशन. क्वेश्चन लिखो, अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ, हाउ मेनी ट्रांजिशन आर देयर. अभी कितने दिखाए हैं स्क्रीन पे? स्क्रीन पे कितने दिखाए? 4 दिखाए. अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. और यू डोंट वरी अबाउट द साइंस, साइन नहीं चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड में बताओ, कंपेयर करके बताओ. सबसे छोटा कौन सा एनर्जी लेवल, कौन सा एनर्जी ट्रांजिशन है, उसके बाद एक तो बहुत ही कॉमन सेंस है, लॉजिकल. सबसे छोटा कौन सा है? 4 to 3 है, नो डाउट. ठीक है. और सबसे बड़ा कौन सा है? 1 to 3 और 2 to 4 में चेक करना पड़ेगा. ठीक है, 1 to 3 आएगा, बट चेक कर लो. ऊपर एकदम लॉजिकली नहीं है ना कि यही होगा, चेक करना पड़ेगा, है ना. करो जल्दी करो. बट एक चीज पक्की है, 1 to 2 नहीं, 1 to 2 और 2 to 4 वाला भी चेक करना पड़ेगा. 1 to 2 बड़ा है. So please. So is 1 to 2 the highest? Like, No, 1 to 3 is the highest. 1 to 3 is higher than 1 to 2, no? oh, Yeah. So basically you have to check 1 to 2 वाला और 2 to 4 वाला, ये दोनों चेक करने हैं. जल्दी से बताओ वैल्यू कितनी है. One, gate close. Yeah. मैं नोटबुक मंगा रहा हूँ, ठीक है. I'll ask for notebook in which you have done this. So write it.
निकाल लिया? सबको आया है? किसी को anyone is not getting it? Which what is the answer? Energy from 4 to 3. वन टू थ्री। और बोलो बीच में। 4 to 2 का अब यहाँ पे इसके लेफ्ट में लिखो 4 to 2। बड़े पढ़ लो, ध्यान से सुन लो, फ्री का मार्क्स है, एकदम एकदम कॉन्सेप्ट एकदम आ जाएगा, क्वेश्चन होगा ही पक्का। फिर ई 2 to 1, ठीक, 2 to 1, ठीक है। निम्मी और निमलन, you have understood? So why 4 to 3 is more than? फाइंड आउट करो। 4 to 3, 4 to 3 लीस्ट है ना? Okay, oh yeah, fine, thanks. Okay, okay, line okay, see, that energy, okay, so this energy which is emitted, for example, लिखो electron goes from 1 to 2, लिखो electron goes from 1 to 2, 1 to 2 का एनर्जी कितना होता है बोलो? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हेन इलेक्ट्रॉन सी, देखो कॉन्सेप्ट सुनो क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम है, मस्त, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा उसका? हाँ, उसको बोलते हैं अनएक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या बोलता है? n equal to 1, ठीक। n equal to 2 is called first excited state, लिखो n equal to 0 is called ground state, n equal to 1 is called first excited state, n equal to 2 is called first excited, sorry, n equal to 1 is called ground state. It's just like apartment, 1 वाले को ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं और सेकंड वाले को बोलते हैं जैसे फर्स्ट फ्लोर ना, वैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक। n equal to 3 को क्या बोलेंगे? सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ओके। तो अगर जैसे मैंने पूछा एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो आंसर क्या है? फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो आंसर कितना है? 10.2। ग्राउंड स्टेट मतलब n equal to 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n equal to 2, 10.2, ठीक है, ठीक। अब देखो, सो सपोज एक ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? n equal to 1 पे होगा। अब तुम क्या करते हो? उसको एनर्जी दे देते हो 10.2, बाहर से 10.2 एनर्जी दे देते हो। सो फॉर मोमेंटली इट विल गो फ्रॉम n equal to 1 to n equal to 2, ठीक। Momentarily it goes from n equal to 1 to 2, and then it comes back from 2 to 1. While it's coming back, it radiates electromagnetic radiation. Okay, लिखो पूरा प्रोसेस लिखो। If we give 10.2 electron volt to a ground state hydrogen atom, if we give 10.2 electron volt to a ground state electron volt to a ground state hydrogen atom, the electron goes to n equal to 2 momentarily, ठीक है। ओके, क्या बोला था मैंने? If we give 10.2 electron volt to a ground state atom, 2 momentarily, and then comes back to n equal to 1. While it is coming back, it radiates EMW of energy 10.2 electron volt. It radiates EMW of energy और फोटॉन भी लिखना साथ में, ठीक है, ब्रैकेट में।
It radiates EMW ब्रैकेट में photon of energy 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. Photon is unit of light, unit of electromagnetic. Second one. सारे EMW के photons. हाँ. Not sure. Check and tell you. अब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन है, तो उसका एनर्जी होता है E इक्वल टू एच न्यू. लिखो E इक्वल टू एच न्यू. 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका एनर्जी है E इक्वल टू एच न्यू. सो 10.2 इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू. यहां से न्यू निकालो, कैलकुलेटर यूज कर लो, और यू हैव टू कन्वर्ट बैक टू जूल. E equal to h nu. The E value was 10.2 electron volt equal to h nu. H का वैल्यू पता है, nu निकालो. You have to convert the electron volt to joule so that the nu comes in hertz. कितना आया? 15 हर्ट्ज ना. इसका लैम्डा निकालो. लैम्डा इज स्पीड ऑफ लाइट बाय फ्रीक्वेंसी. इनका वैल्यू कितना फिर से बोलना आशी? 2.6 into 10 to the power. इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट कर दिया था ना. और लैम्डा कितना होता है? लैम्डा होता है c बाई न्यू. तो वहां से लैम्डा आएगा. नैनोमीटर बताना है. नैनोमीटर्स कितना? थोड़ा सा कुछ 150 नैनोमीटर. फिर से बोलो. नैनोमीटर फिर से बोलो. कितना नैनोमीटर? 100 नैनोमीटर. 115 नैनोमीटर आ रहा है. इतना ही आ रहा है. 115 नैनोमीटर. ठीक है. अभी चेक करो. 1 to 2 का था ना ये. क्या क्या? ही इज गेटिंग 115 नैनोमीटर. बोलिए. Nanometer is 10 power 9 meter. See, you are getting frequency as this much. Lambda is 3 into 10 power 8 divided by 2.6 into 10 power 15. ये आंसर आएगा, right? And then this answer you have to, this answer is in meter, so you have to divide by 10 power minus 9, right? So that you get the answer in nanometer. तो जो nanometer का कितना है? 115 nanometer आया. ठीक है. ये था 1 to 2 का ना. 1 to infinity का एनर्जी कितना होता है? 13.6. उसका भी निकालो. नहीं, मैंने बोला था नैनोमीटर में लिखना, which is 115 नैनोमीटर.
आ गया? Won't it be just 115 into 13 by 10 approximately? तो तुमने 10 पॉइंट की जगह 13 पॉइंट लिया है। करके देखो, आई एम नॉट श्योर। पहले ही कैन नॉट बोल दोगे तो कभी होगा ही नहीं कुछ। पहले ही कैन नॉट बोल दोगे तो नहीं कर पाओगे। कितना आ रहा है? 91। सही है, कम आना चाहिए वैसे, ये तो कॉमन सेंस है। एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी, तो लैम्डा कम आएगा, है ना? 91 है। ज्यादा एनर्जी किस में है, 1 टू इंफिनिटी में कि 1 टू 2 में? जिसकी ज्यादा एनर्जी उसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज E इज इक्वल टू H न्यू, राइट? देखो, मोर एनर्जी मींस मोर फ्रीक्वेंसी एंड मींस लेसर लैम्डा। More energy means more frequency of the photon and means lesser lambda of the photon. ठीक है? सुनो सुरानी, उस बुक उसको दे दो। दिस पेज, द नेक्स्ट पेज एंड द नेक्स्ट पेज, थ्योरी का फोटो ले लो, ग्रुप पे डाल दो। ये तुमको लिख के लाना है कल, ठीक है? पार्डन? हाँ, देख बार ऐसे दिखा दो। दिस टू इधर भी राइट साइड भी, हाँ ये भी। लेफ्ट आगे करो। इधर क्या लिखा है? डेरिवेशन लिखिए, क्या लिखा लेफ्ट साइड में? हाँ हाँ, ये भी नहीं, ये पूरा पूरा, ये दोनों, ये भी 6 टोटल 6 साइड्स, यस। ठीक है, total 6 sides, 3 pages. Online people, do you have any questions from today? See you. Bye bye. Leave. So can you just okay, thanks. Pardon. I have recorded.